Okay friends, let's continue with our previous lecture. So what did I tell you yesterday? State variable, I will just dot down the points. State space analysis, it's basically time domain analysis. What do I mean by that? Like frequency domain analysis is that's like transfer function analysis is frequency domain analysis. State space analysis time domain analysis, because we retain the independent variable as time. है ना, हमारे जो इक्वेशंस हैं कुछ ऐसी बनी x डॉट की, है ना, x डॉट इज बेसिकली dx upon dt. So that's what I mean by this is time domain analysis, isn't it? Yes, sir. And further, you will see later on that there is no restriction that initial conditions have to be taken as 0, huh? There is no such restriction. You can have even non-zero initial condition. Can be applied to multi-input, multi-output systems, okay? Time varying systems. And even non-linear systems. Okay. And state space analysis is said to be a more detailed description of a system. It is said to be a more detailed description of a system. What do I mean by that? Transfer function modeling में क्या करते हैं? We focus on input-output dynamics. So some dynamics of the system which is not contributing to the input-output coupling, that doesn't come in the transfer function. Whereas state space analysis, there is no such restriction. We are not concentrating on the input-output coupling. We are taking all the dynamical variables of the system. So that's why this is said to be a more detailed description of a system. These things will become clear in due course of time. What I mean by these things. Okay. State space analysis is predominantly based on matrix theory. Based on matrix theory, है ना? And it's easily amenable to computer-based solutions, to computer simulations. कंप्यूटर के थ्रू इसको इजीली ऐसी ये जो स्टेट स्पेस मॉडल है, इट्स मोर इजीली एमेनेबल टू कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशंस. कंप्यूटर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, क्योंकि मैट्रिसेस के थ्रू आप सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो ना. सो दीज आर सम सैलिएंट पॉइंट्स ऑफ स्टेट स्पेस एनालिसिस. ओके. Yesterday we discussed about some new terms that we encounter while discussing state variable analysis of dynamical systems. We talked about state, है, we talked about a state variable, we talked about state vector, है ना, we talked about state space, and we talked about state trajectory.
these terms we have discussed yesterday, isn't it? And furthermore, I also give you a what you call idea about how a state space model looks like. And in general, I told you that a state space model looks like this: x dot equal y is equal to cx. And for the sake of completion, actually it's written like this: y is equal to cx plus du. Okay. Maximum systems में ये वाली term missing होती है, but overall the state space model looks like this. It has two parts. This is the state equation, and what is state equation actually? It is a set of equations, set of n first order differential equations, है ना? Set of n first order differential equations, isn't it? This is the output equation, है ना? And this is a set of algebraic equations. There is no dot term in this. इसमें डॉट वाली टर्म नहीं है, और मैं इसको सेट इसलिए कह रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी आउटपुट्स यू हैव. इट मे बी इवन अ सिंगल इक्वेशन इफ यू हैव अ सिंगल इन आउटपुट सिस्टम, but in case you have multi-output system, it will have many equations, but all of them will be algebraic equations. Are you getting me? और मैंने आपको कल ये भी दिखाया कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे हम स्टेट स्पेस मॉडल कैसे डिराइव कर सकते हैं, और मैंने एक फिजिकल सर्किट भी लिया और उसका भी हमने देखा कि स्टेट स्पेस मॉडल कैसे ऑब्टेन करते हैं, है ना? अब मैं और एक सर्किट लूँगा अभी, एंड वी विल ट्राई टू अप्लाई वट एवर वी हैव लर्नड yesterday to that circuit in order to get its state space model. Clear so far? So I'll take the model from the book. Let's say something like this. Huh? ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं, देन विल ब्रेक इट, फिर देखते हैं कितना बनेगा ये. Output is the current through this inductor L2. Okay, current through inductor L2 is the output. I have to obtain its state space model. Okay, so how do I get the state space model? We'll first of all define the state variables, है ना? State variables के लिए हम पहले जरा variables इस system के describe करें. This is actually current I1, है ना? This is current I2, and this is also an intermediate variable, which is this voltage. I'll call this VC. This is the ground level. इसमें तीन energy storage elements हैं, L1, L2 and C. So there will be three state variables. Okay? कौन कौन सा state variable होगा? Current through this inductor L1, voltage across this capacitor, and current through this inductor. These will be the state variables. So we'll choose the state variables. पहला step है ना यही, state variables choose करना. Since there are three energy storage elements, there will be three state variables. So current through inductor L1, that is I1, है ना? That will choose equal to X1. Okay? Voltage across capacitor C is actually VC. We'll call this as X2.
and current through inductor L2 is actually I2, है ना? Current through inductor L2, that is I2, we'll call this as X3. Okay? अब मुझे इन तीन स्टेट वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस चाहिए. That's basically what I want. So I'll write down the equations for this circuit first. Do you get me? Now you know that this is x1, this is x2 and this is x3. ये ना, ये वाला x1 है, ये x2 है ना, और ये इसके थ्रू जो करंट है वो x3 है. Let me write down its equations. And you know that this input we represent as u and output we represent as y. So output के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले हम input equation लिखें. इसकी हम equation लिखेंगे. So the equation for this is u equal to r1 x1 plus L1 dx1 by dt, that is x1 dot, plus this voltage, that is x2. Do you get me? Then second equation is, या इसको मैं पहले rearrange करूँ इस equation को. So x1 dot is minus r1 by L1 x1, सही है, minus 1 by L1 x2 plus 1 by L1 u. This becomes my equation 1. Inayat, it's okay? Yes, sir. Now equation number 2. I'll apply KVL there. Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. So we have got, or let me obtain the current through this capacitor C. Huh? What is the current through capacitor C? I2 minus I1 for this. Or I1 minus I2? Yes, sir. I1 minus I2, है ना? I1 minus I2 is equal to C dVc by dt. सही है? Yes, sir. Or I can write, what is I1? I1 is x1. X1. What is I2? X3. I2 is x3 is equal to C, D x2 dot. that is x2 dot. सही है? Or I can write x2 dot equal to 1 by C x1 minus 1 by C x3. This becomes my equation number 2. सही है ना? Yes, sir. Now I write KVL for this equation. तीन इक्वेशन मुझे चाहिए ना? Yes, sir. अच्छा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर की ओर. So this becomes minus x2 minus x2, सही है ना? Yes, sir. Plus L2 x3 dot, Yes, sir. सही है? Yes, sir. Plus R2 R2 x3. x3 equal to 0. ये वाले लूप के अक्रॉस KVL स्टार्ट यहाँ से किया है ना, तो इधर से इधर की ओर जा रहा हूँ. ये वाली वोल्टेज x2 है, ये माइनस x2 हुई. Then I move like this, है ना? I am moving in the direction of current, so this will be a positive term. So L2 x3 dot plus R2 x3 equal to 0. I'll get x3 dot from this. Okay, x3 dot is minus, no minus नहीं, plus 1 by L2 x2 minus R2 by L2 x3. सही है? Yes, sir. सही है ना? ये बन गई तीसरी इक्वेशन. तो आगे मेरी तीन इक्वेशंस. Yes, sir. Now I write down these three equations in the form of matrix. Yes, sir. What do I get? I'll rub it here. So I get equations like this. So I have got x1 dot, x2 dot, x3 dot is equal to, सही है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ. ठीक है ना? ये आपका VIT है इक्वल टू U, है ना? So this will be a 3x3 मैट्रिक्स. और यहाँ पे x1, x2 और x3. x1 की टर्म में क्या क्या है? माइनस R1 बाई L1 माइनस 1 बाई L1 और 1 बाई L1. सही है? x2 डॉट की इक्वेशन में 1 अपॉन C, देन 0, देन माइनस 1 अपॉन C. सही है? x3 डॉट की इक्वेशन में यह गॉट 0, 1 बाई L2 माइनस R2 बाई L2. सही है? देन प्लस पहली इक्वेशन में आपका 1 अपॉन L1 है U के साथ. सो दिस इज 1 अपॉन L1, देन 0 एंड 0 एंड U.
सही है ना, ये बन गया स्टेट इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द स्टेट इक्वेशन, सेट ऑफ, जो मैंने अभी कहा था, सेट ऑफ 3 फर्स्ट ऑर्डर ओडीज. नाउ आउटपुट इक्वेशन, output we represent it as y, that is current through inductor L2, that is I2, that is x3. So this is the output equation. So if I write this in matrix form, so y is equal to 0 0 1 x1 x2 and this is the output equation. Do you get me? Relation between state space model and transfer function model. Okay, what is the relation? Now, as you know, the state space model is something like this: x dot equal to ax plus bu, and y is equal to cx. Let's say plus du also. Okay. By the way, let me tell you, this matrix A is known as the system matrix. What do we call it? System matrix. It's an input vector. Vector, or it may be a matrix also, if it is a multi-input, multi-output system, because the number of columns in B corresponds to the number of inputs. C is the output vector, or it may also be a matrix. Enough? And D is known as the feed forward matrix. What do we call it? Why this is known as feed forward matrix will become clear after some time. Single input, single output systems के लिए scalar होता है, because if it's a single input, single output system, so you know that U is 1 cross 1. This also has to be 1 cross 1. So this necessarily must be 1 cross 1, which is actually a scalar. But if it's a multi-input, multi-output system, it may be a matrix. Do you get me? So this is your state space model. And the initial conditions are defined as x of t0, that means initial time. इसको normally ऐसे लिखा जाता है. This means the initial conditions. And for linear time invariant systems, this t0 can also always be taken as equal to 0. For linear time invariant systems, t0 is for the sake of convenience, mathematical convenience, for the sake of mathematical convenience, taken as 0. This is true only for LTI systems. You cannot do this for time varying systems. For time varying systems, the initial time does matter, but it doesn't matter for linear, because this remain invariant with respect to time. Are you getting me? तो ये normally ऐसे लिखा जाता है. तो U आपको पता है ये input है, input or inputs, and Y is the output vector of outputs. In fact, this is the output vector, this is the vector of outputs, this is the vector of inputs, है ना? U is the vector of inputs, okay, and Y is the vector of outputs, okay. What about the sizes? Size of matrix A is n cross n, where n is the number of states, x is the state vector, you already know that, है ना? State vector. Size of x is n cross 1. This x dot is also n cross 1, है ना? And U, if you have a multi-input system, so we'll call this as p cross 1, where p is the number of inputs, okay. So then necessarily what should be B? B should be n cross p, है ना? B होना चाहिए n cross p. Then only n cross p into p cross 1 become n cross 1. And Y is the vector of outputs. If there are, let's say, q outputs, so then this will be q cross 1, है ना? Then this will be what? This will be q cross n, C. This will be q cross n. X is n cross 1. That makes it q cross 1. U is what? N cross p. Sorry, U is p cross 1. So what should be D? D should be नहीं q cross p, है ना? D का साइज होना चाहिए. Then q cross p into p cross 1 will become q cross 1. Are you getting me?
But if we have single input, single output system, that means P and Q are equal to 1. So accordingly, the dimensions of the other matrices will change. Do you get me? You should be pretty much clear about the dimensions of the matrices. अच्छा, मैंने टॉपिक क्या लिया था? रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट स्पेस मॉडल एंड ट्रांसफर फंक्शन मॉडल. So I'll rub it and I will just come back to the topic. You have got x dot equal to ax plus bu, isn't it? Y is equal to cx plus du, and x of t naught is defined as x naught, initial conditions. Now you know that once you have to obtain the transfer function of any system, you have to take the Laplace transform, and you normally assume the initial conditions to be 0. So अगर मुझे स्टेट स्पेस मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ऑब्टेन करना है तो मैं क्या करूँगा? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा है उसके मैं Laplace ट्रांसफॉर्म लूँगा. आई विल assume the initial conditions to be 0. So this is equation number 1. Taking Laplace transform of equation 1, assuming 0 initial conditions. Okay, so what does that make this? Very good. Sxs equal to axs plus bus, है ना? Okay. What if I don't assume the initial conditions to be 0? There will come one more term here, sxx minus x naught, isn't it? So if I, in the beginning, I take the general form, I don't assume initial conditions to be 0. Okay, so there will come another term here. So if I rub this thing, I don't assume initial conditions to be 0, I'll get something like this. Sxs minus x naught is equal to axs plus bus. See it? Okay. Now this xs on this side, xs on this side, I can take them on one side. So what will I get? S plus A, S minus A, S minus A, X. But what is A? Is a matrix. What is A? S. S is scalar. It cannot be S minus A. We have to do something like this, where this is a identity matrix of the same order as A. Are you getting me? So Si minus A xs, isn't it? Minus x naught equal to bus. So yeah, or I can write Si minus A xs is equal to x naught plus bus. So yeah, or I can write xs is equal to Si minus A inverse x naught plus Si minus A inverse b u of s. ठीक है ना? तो ये जनरल एक्सप्रेशन हम पहले ऑब्टेन करके रखेंगे. देन दिस बिकम्स माय इक्वेशन 1, लेट्स से. Now I have the output equation also, because while obtaining the transfer function, I have to obtain the ratio of the Laplace transform of the output variable to the Laplace transform of the input variable. So I'll take Laplace transform of equation 2 also. I'll call this equation 2. Okay, taking Laplace transform of equation 2. What do I get? I get ys is equal to c xs plus dus. So yeah, na? Which one? This will call as 3. ठीक है ना? Ys is equal to cxs plus dus. Now xs, I have obtained this. I can put it here. So I can write ys is equal to c से ये xs का पूरा multiply हो जाएगा. So I'll get c si minus a inverse x naught. So yeah, inverse x naught plus c si minus a inverse of bus. ठीक है? Then I have got plus dus. सही है ना? So this is ys. xs का वैल्यू मैंने यहाँ से उठ के यहाँ पे डाल दिया. Are you clear? Is it clear to you?
Okay. Now, in order to get a closed form expression for transfer function, now I take the assumption of 0 initial conditions. Okay. In order to get a closed form expression for transfer function, we assume initial conditions to be 0. इसका ध्यान रखो, ये देखो ये कितना साइज वाइज क्या बना है इसका. We assume initial conditions to be 0. So what do I get? I get ys is equal to, this term goes, if I take initial conditions to be 0, what do I get? I get c si minus a inverse of b u of s plus du of s. सही है ना? Or I can write it as ys upon us is equal to c si minus a inverse, this is c here, inverse of b plus d. सही है? By definition, this is the transfer function. By definition, ys upon us is equal to gs, which is the transfer function. सही है? So that means it implies gs is equal to c si minus a inverse of b plus d. So given the state space model of a system, that means given the matrices A, B, C and D, you should be able to obtain the transfer function. Are you getting me? And since you know that in transfer function we assume the initial conditions to be 0, so while moving from state space model to transfer function, we are losing some information, isn't it? Because we are taking an assumption of 0 initial conditions. So that's why I was telling you that state space model is a more complete description of a system. There is one more reason for that. One more reason why I told you that this is a more complete description of a system. So अभी तक हमने देखा यहाँ पे अगर आपको स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है तो उससे ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन करते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट. आर यू गेटिंग मी? विल गो इनटू अ बिट मोर ऑफ डिटेल्स अबाउट दिस एक्सप्रेशन. GS is equal to C SI minus A inverse of B plus D. It's clear up till now? So you've got the expression GS is equal to C SI minus A inverse of B plus D. Okay? Now you know that by definition SI minus A inverse is adjoint of SI minus A upon determinant of SI minus A. By definition SI minus A inverse, किसी भी matrix का inverse, that is equal to adjoint of SI minus A upon determinant of SI minus A. सही है ना? Where this adjoint of SI minus A will itself be a matrix of the same size as SI minus A, and the determinant of SI minus A will actually be a polynomial, है ना? Polynomial in S. And what will be its degree of this polynomial? Number of state variables. N. N will be the degree of the polynomial, है ना? So you will get something like this. So GS is equal to C. Instead of SI minus A inverse, I can write adjoint of SI minus A upon determinant of SI minus A, then you have B plus D. सही है? Or I can write GS is equal to C adjoint of SI minus A B plus determinant of SI minus A into D divided by determinant of SI minus A. सही है? ठीक है? इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम्स के लिए, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम्स के लिए इसका साइज क्या है? C का. What is the size of C? Oh, sorry. ठीक है? लाइट कम तो नहीं है? अच्छा. क्या है साइज C का? 1 cross n. 1 cross n. This is 1 cross n. What is the size of this? N cross n. N cross n of A. What is the size of this? It will be n cross 1. It's n cross 1. What is the size of this? It's 1 cross 1. है ना? तो ये इसका साइज जो है
दैट्स 1 क्रॉस 1 This one. एंड डी इज ऑल्सो 1 क्रॉस 1 है ना यहाँ पे. Yes, sir. अच्छा यहाँ पे आप देखो ये तो स्केलर है ही, ये तो एक पॉलिनोमियल है ना, Yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए. Yes, sir. So means what I mean to say is that the numerator this numerator it is actually a polynomial and denominator तो है ही polynomial. Denominator polynomial की डिग्री क्या है? n. Yes, sir. Transfer function हमने पढ़ा है. Transfer function is the ratio of two polynomials. So it's coming out to be a ratio of two polynomials. And what's the denominator polynomial known as? Characteristic equation. Characteristic polynomial. Characteristic polynomial. What's the denominator polynomial here? SI minus A. So this determinant of Si minus A is basically the characteristic polynomial. Are you getting me? Yes, sir. So determinant of Si minus A is basically the characteristic polynomial. What is this? Characteristic polynomial. And अगर आप कोई मैट्रिक्स लो, मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A, what does this determinant of lambda I minus A give you there? It was giving us eigenvalues. Eigenvalues, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो ट्रांसफर फंक्शन का होता है, जब उसको सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को, व्हाट डज दैट गिव यू? ट्रांसफर फंक्शन के केस में जब आप डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जिसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर हम उससे इक्वेशन एक बनाएं, पोल्स होते हैं ना सिस्टम के, दैट मीन्स दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट दैट आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम आर सेम एज द पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में से कुछ फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएं. ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि जब हम ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम की डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन द ट्रांसफर फंक्शन एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स wherein the common factors are cancelled out. Common factors are cancelled out. तो जब हमने स्टेट स्पेस मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन किया, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में से कोई फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, इजंट इट? तो वो आपको ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में वो वाला वो जो वैल्यू है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया होगा ना. जबकि जब आप आइगन वैल्यूज ऑब्टेन करोगे मैट्रिक्स ए के, उसमें वो वाला वैल्यू भी आएगा. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए. ए इज द मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n. आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यू गेट व्हाट? यू गेट द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम. अगर ए का साइज n क्रॉस n है, हाउ मेनी आइगन वैल्यूज यू गेट? n आइगन वैल्यूज. अब अगर आपने इस स्टेट स्पेस मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन की, और ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करते टाइम अगर कैंसलेशन नहीं हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, नहीं हुआ, तो उस केस में दिस बिकम्स सेम. दैट मीन्स पोल्स एंड द आइगन वैल्यूज विल बी सेम, इजंट इट? But in case there is a pole zero cancellation, some of the numerator factor and the denominator factor cancels out. So poles में वो वाला eigen value नहीं दिखेगा जो कि cancel out हुआ. So in general, the set of eigen values of a system is a superset of the set of poles of the system. Or in other words, the set of poles of the system is a subset of the set of eigen values. They may even be same in case there is no cancellation between the numerator polynomial and the denominator polynomial. तो वही मैं अभी आपको कह रहा था कि पोल से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सिस्टम के बारे में? स्टेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो आइगन वैल्यू जब हम ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स ऑब्टेन करते हैं, उसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है. सेम इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द आइगन वैल्यूज, isn't it? But I have seen here that sometimes it may happen that the number of eigenvalues may be more than the number of poles. So is this a contradiction? Because the system is same. How can if I obtain the information about of the system stability from poles? So maybe ऐसे मान लो आपका कुछ ऐसा है, आइगन वैल्यूज जो है दे आर 1, -1 एंड -2, और जो सिस्टम की पोल्स हैं दे आर -1 एंड -2. 1 वाला कैंसिल आउट हुआ. लेट्स अज्यूम दीज आर आइगन वैल्यूज एंड दीज आर पोल्स. बोथ these poles are negative, left half of the S-plane. So I say that the system is stable. But once I look at the eigenvalues, there is one positive eigenvalue. So I say that the system is unstable. So that is a contradiction. Because a system cannot be stable and unstable at the same time. Because stability is a system property. It doesn't depend upon what sort of mathematical model we obtain for a system. So we will for the time being assume, we will solve this problem later on. What does this actually mean? For the time being, we will assume that there are no cancellations between the numerator polynomial and the factors of the denominator polynomial. So that from the number of eigenvalues and the set of eigenvalues is exactly the same as the set of the poles. Are you getting me? अच्छा, दूसरा हमने ट्रांसफर फंक्शन के केस में देखा है कि जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होता है, इसकी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं उनको जीरोस बोलते हैं,
और डिनोमिनेटर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं उसके रूट्स को पोल्स बोलते हैं. So same information you can get also from this thing also. So this equation when you solve, that will give you the zeros of the system. This equation when you solve, that will give you the poles of the system. So we are assuming that there are no pole zero cancellations. None of the poles is cancelling with the zero. There are no pole zero cancellations in the system. In that case, the set of set of poles of the system will be the same as the eigenvalues of the system. But in general, the set of eigenvalues is a superset of the set of the poles of the system. Are you getting me? So Si minus a is the characteristic polynomial of GS. है ना, which is also the characteristic polynomial of matrix A. Characteristic polynomial of matrix A, system matrix, है ना. तो इससे आपको ये भी आइडिया लगा कि सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो मैट्रिक्स ए पर डिपेंड करती है. अगर आप मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज ऑब्टेन करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि सिस्टम स्टेबल है कि तभी हमने इसको सिस्टम मैट्रिक्स कहा. एक यस, विल सी हाउ वी कैन हैव द कंट्रोल ओवर इट. वो कंट्रोलर डिजाइन कैसे करेंगे. अगर हमें सिस्टम, अगर मान लो कोई सिस्टम अनस्टेबल है और अगर हमें उसको स्टेबलाइज करना है तो हमें ए मैट्रिक्स को चेंज करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा वो देखना है. दैट इज डिस्कशन फॉर सम अदर डे. इज दैट क्लियर? सो what we found here is that the poles of the system, or you can say the set of poles of the system, है ना, is a subset of the set of eigenvalues of the system. The set of poles of the system is a subset of the set of eigenvalues of the system. जो आज का हमने एग्जाम्पल किया, जिसका हमने स्टेट स्पेस मॉडल ऑब्टेन किया, यू कैन डू अ लिटिल एक्सरसाइज एट योर प्लेसेस. यू कैन जस्ट हैव द ट्रांसफर फंक्शन मॉडल फॉर दैट. हमने अभी जो सिस्टम ऑब्टेन किया ना, x dot equal to x plus b, y equal to cx. This is the set of poles of the system, is a subset of the set of eigenvalues of the system, है ना. तो हम उस सिस्टम के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करोगे इस मेथड से. ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए इनवर्स ऑफ बी प्लस डी. इसमें जो मैथमेटिकल एफर्ट लगेगा वो एस आई माइनस ए इनवर्स ऑब्टेन करने में लगेगा. हाउ डू यू ऑब्टेन एस आई माइनस ए इनवर्स, है ना. पहले एस आई माइनस ए मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा. उसका इनवर्स ऑब्टेन करने के लिए ऑब्टेन द एडजॉइंट एंड देन डिटरमिनेंट. वो ऑब्टेन करके आप उसका ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करोगे. एंड देन यू विल फाइनली टेल मी व्हाट आर द पोल्स ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द सिस्टम. आर द सेम. आइगन वैल्यूज ऑफ सिस्टम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं आप? ए को सॉल्व करके, ए के आइगन वैल्यूज ऑब्टेन करके. और पोल्स ऑफ द सिस्टम आप ऑब्टेन करोगे जब डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, उसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, उससे पोल्स ऑब्टेन करेंगे. एंड देन यू कैन वेरीफाई दिस थिंग. आर यू गेटिंग मी? इज दैट क्लियर? So this is the relationship between the transfer function and the state space model. So you can always obtain the state space model from the transfer function from the state space model. And also you can convert the transfer function into a given the transfer function, you can always convert it into a state space model. So there's a proper way of doing that. But since I have told you that the transfer function of a system is unique, but there can be infinite state space models for a system. So we can, starting with a given transfer function, we can convert it into an equivalent state space model in a number of ways. आइडियली इन इनफाइनाइट वेज. इनफाइनाइट तरीकों से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट स्पेस मॉडल में. लेकिन हम वो स्टेट स्पेस मॉडल्स चूज करते हैं, इसमें कन्वर्शन उनमें करते हैं जो कि मैथमेटिकली कन्वीनियंट हो. दो स्टेट स्पेस मॉडल्स व्हिच आर मैथमेटिकली, व्हाट डू आई मीन बाय मैथमेटिकली कन्वीनियंट? वेयर इन द मैट्रिसेस, पर्टिकुलरली द मैट्रिक्स ए comes in a what you call mathematically convenient form. Like मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, सबसे ब्यूटीफुल मैट्रिक्स जो माना जाता है, दैट्स द डायगोनल मैट्रिक्स, isn't it? So if I can convert my transfer function model into a state space model in such a way that matrix A comes in diagonal form, so that is really what you call appreciated. We want a model in that form. So we will look at some special state space models corresponding to a transfer function, and those special models are known as canonical models. The word canonical in English language means special. Okay, so starting with the general transfer function model, we will try to obtain the equivalent state space model in canonical form. तो कम से कम हम 3 canonical forms study करेंगे. एक तो diagonal वाला, और दो और करेंगे study which are known as first convenient form and second convenient form. We'll come to that later on.